In this video we're talking about inserting plane. So let's start. Go to the sketch and we're making the one rectangle. Exit, extrude, so that is going to the plane. We have plane to parallel to this plane at something distance along these planes or this surface or these three plane. So we going to the shape and generative shape design. So we have this workbench. No shape digital shape design और shape generative shape design ये है. तो टूल में जाएंगे, टूल में जाके कस्टमाइज and अरे हैंग पड़ गया थोड़ा सा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वेट करते हैं. So this is coming and we toolbars, restore all, okay, restore position, okay. So that is a plane command is showing here. So close it and this is the plane command. So we take it and reference plane is this. So this is the river direction and we change the direction while pressing this button, river direction. So offset distance here we have taken 90. So this is the plane we are made it. अभी हमको क्या चाहिए कि 3 पॉइंट के परपेंडिकुलर प्लेन हमको चाहिए, तो हम डायरेक्टली प्लेन पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे जाके 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, 1 पॉइंट ये क्लिक करेंगे, 2 पॉइंट ये क्लिक करेंगे और नहीं ये दिस इज नॉट डन, कंट्रोल Z. सो सेकंड पॉइंट ये क्लिक करेंगे और थर्ड पॉइंट जो है वो ये क्लिक करेंगे. सो दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस 3 पॉइंट. सो preview. Okay, and we make this plane is perpendicular to this 3 point, and we also make some other plane perpendicular to this plane,
एट 90 सेंटीमीटर और 190 सेंटीमीटर एम में ही सारे डिस्टेंस है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसका क्या उपयोग है, तो ये देखो, हम अभी इससे पैरेलल पे ये प्लेन लिए, हम वर्क बेंच पे बदलेंगे, पार्टीशन में जाएंगे, तो इस प्लेन को तो सिलेक्ट किया है, स्केच में जाएंगे तो यहाँ पे हम ड्राइंग बना सकते हैं कुछ भी ऐसा। ये सर्कल बनाया, तो एग्जिट मारेंगे तो उस प्लेन पे सर्कल बनेगा। अब उसका समझ लो कि दिस इज सरफेस एंड वी मेक द ड्राइंग some object at a distance of मतलब कि आपको एक प्लेन बनाना है एट द डिस्टेंस, मतलब कि एक डिस्टेंस पे आपको एक ड्राइंग करनी है। तो एक प्लेन लेंगे आप एक डिस्टेंस पे और उस पर ड्राइंग बनाएंगे, तो एक डिस्टेंस के अलोंग वो ड्राइंग बन जाएगी, उससे चढ़ के, मतलब कि उससे अलग होके। यह इस सरफेस से ये 90 सेंटीमीटर, ये 90 mm के डिस्टेंस पे ये बना हुआ है, मतलब कि 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है। सो थैंक यू, अगले वीडियोज़ में आगे की बात देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।